Meanwhile, I can thank all the guest speakers up to this webinar. We are live. Okay. So today we are all indebted for all the world snakes who made this day as a World Snake Day, and they are always there for our protection. Cheshnath ji is there. Yes, sir. And Funkaring and Bogal, Ramchandra ji के पास भी सर्प जैसे बाण थे. So with all thank you, sir. We are live. Okay, sir. Thank you. आज के सभी वक्ताओं को मेरा प्रणाम. बहुत बढ़िया, मेरे को ज्ञान मिला. तुमने अच्छा रिक्वेस्ट कर दिया साथ पितास को जोड़ने के लिए. मैं आपका आभारी हूँ और सभी स्पीकर का आभारी हूँ. मुझे बहुत कुछ ज्ञान मिला आज. थैंक यू वेरी मच. स्पीकर्स का स्वागत कर दीजिए फॉर्मली महेश जी. Thank you very much on behalf of organizing and पवन कुमार and his team. जैसे उन्होंने कल बताया था कि ये महर्षि सुश्रुत जयंती हम 3 दिन की सोचे थे, उन्होंने 7 दिन और भी जरूरत पड़ी तो आगे करेंगे. इसके लिए मैं उसकी पूरी टीम को साधुवाद करता हूँ. डॉक्टर संदीप कुमार भी ज्वाइंट हो रहे हैं क्योंकि ये लोग सर्जन है. सो ऑलवेज इंसिडेंट टाइम फिक्स होता है, तो थोड़ा सा देरी हो जाएगी तो माफी चाहूँ. पवन, उसकी मैंने आपको स्लाइड भेजी है, तो आप वहां से प्रेजेंट करना सर जब बोलेंगे तभी. आपको मैंने व्हाट्सएप किया है, जरा उसमें आप अपने में ले लो. मेरे को जरा मुश्किल काम है मेरे लिए. तो संदीप कुमार जी को जो है मैं पहली बार कलकत्ता में एसीकॉन में मिला था, और तभी मेरे प्रेजेंटेशन के बाद में हम लोगों ने बहुत अच्छा लंबा चौड़ा डिस्कशन किया. और जहां पर वो फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे सर्जरी में, वहां पर 75 साल की उनकी जो एक स्पेशल अटल बिहारी की वाजपेयी थी, उस समय पे जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मेरे को एज ए लाइव प्रमोशन के लिए बुलाया था. और उसके बाद में बहुत सारा काम किया सर के साथ में. बहुत कुछ मैं उनसे सीखा हूँ. तो आज शॉर्ट नोटिस में सर ने हाँ कर दी, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ. सर आप ज्वाइंट हो गए? संदीप कुमार जी. इसके बाद के स्पीकर है एमडी समुद्री करके. ही इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन हिज एरिया, गदक कर्नाटक. पवन जी का कहना था कि नीचे साउथ में से कोई नहीं है, तो उनका समाधान चुना गया है. बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे सॉफ्ट कम्युनिकेटेड मैन है, बहुत सोशली काम करते हैं. और उनको हमने जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है. और अभिनव सोनवणे जी भी जो है वो हमारे YMT के MS है, डॉक्टर विद्या के साथ में रहकर उन्होंने MS किया है. और बहुत सारे सेमिनार में वो हमारे साथ जुड़े हुए और अच्छे सर्जन भी है और अच्छे वक्ता भी है. तो आज के तीनों को जो है अलग अलग चीज के लिए हम लोगों ने नियुक्त किया है. और अगर संदीप कुमार जी ज्वाइंट हो गए तो वो प्रेजेंट करे, नहीं तो फिर समुद्री करे. सर, I request him to join. Let me call him, otherwise we can start with the Samudri. पहले शुरू करवा दीजिए. पॉज इज नॉट गुड फॉर वेबिनार. आप शुरू करवा दीजिए, उसके बाद क्योंकि लेट अपन समुद्री. हाँ, वही तो बात कर रहा हूँ ना, डिले चल रहा है कार्यक्रम. समुद्री, यू कैन स्टार्ट योर स्पीच प्लीज. डॉक्टर समुद्री, कैन यू हियर मी? हेलो अभिनव, आर यू रेडी? Abhinav Sonavane, yes, you can start your speech, please. We are delayed late. They will speak afterwards. Okay, sir. Thank you and welcome. Thank you, sir. So, I would like to pay my respects to Lord Dhanvantari and to Sushruta, Acharya Sushruta, and all my gurus. Sangvi sir, you have been the inspiration for me always. And it is because of you I have reached this place and achieved this success. I really thank you a lot for giving me this opportunity and for making me who I am. So thank you, Sangvi sir, so much. So with your permission, sir, I'll start my presentation. Yes, sir. We are eager to listen to you, sir. Sure, sir. So, sir, the topic that you gave me was the contribution of Sushruta in surgical instruments. So, basically, Sushruta was probably the first surgeon in the world to classify and describe in detail the surgical instruments, the method of manufacture, quality control, maintenance, and specific usage in the diagnosis and treatment of diseases. His conception of surgical instruments are very unique, and there were no earlier comprehensive description of similar surgical instruments by any surgeon, not only in India, but also in the whole world.
We can say that Sushruta was perhaps the first surgeon in the world to describe different types of surgical instruments. And this is far beyond the imagination of any surgeon at the period of time. And obviously, he was far ahead of his time in this field. So, Sushruta basically has described the instruments in two types: blunt instruments and sharp instruments, yantras and shastras. But the thing, or the peculiar thing to understand, is that Sushruta has not only described the instruments, but he has described the way to handle the instruments, a different ways to make the instruments, and all the other things that surround and surgical instruments, all the ethics, mannerisms that we can have around the instruments. So Sushruta has described the instrument in such a detail that it becomes important for us to understand the details of the Sushruta Samhita. So moving forward, we will just have a look at the references in the other civilizations. I mean, before Sushruta, because Sushruta definitely has mentioned about the instruments and all the surgeries in very ancient age, almost 600 to 1000 BC. And we just need to have a brief reference of the other civilizations where the surgeries and the surgical instruments were described. So in the Greco-Roman civilization, there are references of surgery. Also in the Mesopotamian surgery, in the civilization, you find various references of surgery, surgical instruments. Mostly you will find the copper knives and other surgical instruments mentioned in the Sumerian civilization, which is a part of a Mesopotamian surgery, this civilization. Even in the other civilizations that are related to this Mesopotamia, here an Hammurabi's code of law has been mentioned, where in that law, there you will find some surgical procedures and even some surgical instruments. Chinese and Japanese civilizations were not that much oriented in the surgical field, but they had very distinct and very detailed descriptions of medicines, but they were lacking in the surgical part. So Chinese, Japanese civilization lack in surgical knowledge. Then one of the ancient civilizations is an Egyptian civilization. There also you will find the description of surgical instruments and various surgical procedures. Even in the excavations and various, you can say, literature, you will find this description. But when we go through all these civilizations, or if you go through all this history, one thing we'll find that there is no detailed and very keen description about the surgical instruments or surgical procedures in any of the literature or the history or civilization. But Sushruta was the first surgeon in the world to describe surgical instruments and related subjects in detail in his treatise, the Sushruta Samhita. So we will just have a look what Sushruta has to say about this thing. So the description of this instruments, you will find it in Sushruta Samhita, section 1, that is Sutrasthana, chapter 7 and 8, where he has described all the instruments. And also he has devoted one chapter to the experimental surgeries and other types of surgeries. Okay. So moving forward, we will try to find what is the definition of yantra and what exactly shastra means. So there are various references for the yantras and shastras. So the first thing that Sushruta or the other acharyas describe is that sharir avayo hinsa, tat shastra karma. That is, the instruments that can cause a hinsa can be defined as a shastra, and sharira ahinsakam to yantra karma. That is, the instruments which do not cause hinsa, which do not cause trauma, can be called as a yantra. Basically, the instruments that are sharp are shastras, and the instruments that are blunt are the yantras. So he was clever enough to differentiate the two things. Okay, few instruments are used only for the helpful purposes, to just assist in the surgeries, but there are few instruments which we technically use to make an incision or to carry the other procedures, that are the 8 type of procedures, surgical procedures, which are mentioned in the Samhita. So the shastras are specifically mentioned in that part. Okay, so moving forward, Sushruta has also mentioned the materials that you have to use for making instruments. Primarily, he says that loha should be used for making instruments, but if you don't have loha of a good quality, then you can use other this elements and other materials too for making instruments. Not only loha, if you go through the Sushruta Samhita, you will find various elements for making shastras. Like he has indicated the use of tamra, use of tin,
even Mrittika, Shrunga, Alavu, different sort of metals for different sort of instruments. So as your procedure changes, as your theory changes, then you can use different sort of instruments for different procedures. So he has described the material that you should use for making instruments. So this is one thing, and he also says that a wise surgeon should get the instruments made of a pure iron with sharp edges by an expert blacksmith who makes the instrument actually, who is skillful and experienced in his craft. And the use of impure iron as a material for surgical instruments, he depreciates and defects and advises the surgeon not to rely on such instruments. Okay, so the instruments which are not made properly should not be used. If you use those instruments, it will definitely cause harm to the patient and even to your career. That is what he says. So he has tried to describe the qualities of surgical instruments, even of yantras and shastras. So yantra, he says that it should be samahitani, it should be evenly distributed, it should be even in shape. It should be kharas lakshan, that few instruments. If it is khar, if you have seen the modern instruments like artery forceps, Alice forceps, it has a khara end so that it should have a proper grip. Okay. Slakshma mukhani, that is, its mukha should be fine. It should not be slippery. You should be able to hold it properly. Sudrudani, it should be firm. Okay. Surupani, it should be properly constructed. Sugrahini, instruments, you should be able to hold the instruments properly. Sugrahini. So he has made sure that every quality that is important for any instrument should be mentioned in its guna, and these are the gunas that he has described. And he has also mentioned the doshas, I mean the improper instrument. So he says that the instrument that is sthula, atidirgha, atirasva, that is which is not in a proper shape, which is either very broad or very long or very short. Okay. Also, he mentions the grip of the instrument, because the grip of the instrument is very important factor when you do the surgeries. So if the grip is not proper, I mean, if it's vishamagrahi or it's agrahi, then it's not a proper instrument. Also, if it's not in proper shape, that means he says that if it's vakra, that is bent, or it's shithil, it is very loose. I mean, the parts of instruments are not properly fit, or if they are loose, it's not a proper instrument. If it's unnata, that is elevated in between, so that is also not proper instrument. Also, if it's a mrudukil, that is the catch which the instrument has, generally in swastikantras or the forceps that we have seen, it has a catch or a screw in between. If the screw is not proper, then it's not a good instrument. Mrudumukham, the ends of the instrument are not proper. And mrudupasham, okay, if it has a thin edges, it's not a proper instrument. So he has made sure that the proper instrument and improper instrument should be defined before using it in the surgery. Also, the sharp instruments, it should be sugrahini. You should be able to hold it properly. Sulohani, it should be made from proper material. Sudharini, it should have a proper, you can say, sharpness so that you can make a proper incision. Further, you will find that Sushruta have also mentioned the different types of sharpnesses for different type of procedures and how you can achieve that. We will see that in the further slides. Then surupani, it should be in a proper shape. Okay. Then su samahitani mukhagrani and akaralani, that is, it should be in the proper shape, and it should be akaral, that is, the edges should be smooth. There is one exception, that is the kutharika, this shastra, where it needs to have an rough edges. Okay, so that is the shastra sampata. And again, dosha, that is vakra, kuntha, khanda, kharadhara. Okay, so it again describes the shape of the particular instrument, and the grips of the instrument should be proper. Again, the same way he mentioned it in the blunt instrument. So this should be the way your instrument should be. It should be made. And if your instrument or if your surgical instrument passes this particular qualities, then you can use it for the surgeries. Sushruta says that there are 24 types of yantra karma, which you can use this instrument for. So he has defined this 24 type, like nirghatana, mostly means extractions. Purana, you have seen that we use instruments to fill the cavities, the abscess cavities for dressing. So purana. In case of Ayurveda, we generally use grita, tela for purana. Then bandhana, for tying up. Vyuhana, that is raising up and incising the part. Then vartana, chalana, vivartana, okay, turning around. So these are different type of motions and movements that we need during surgery, and different types of instruments should be used for this particular processes. Okay, even he says that other processes like unnaman, vinaman, bhanjana,
and Ashana. These are different types of procedures that are generally performed using this yantras. And this is quite a detailed description of the yantra karma. And for the shastra karma, you know, there are 8 types of shastra karmas described, and the sharp instruments are generally used for that 8 types of this Chedan, Vedan, Lekhan, Ashan, Aharan, Vedan, all 8 types of shastra karma. Okay, so if you have to perform these surgeries, your instrument should be sampad, that is, it should have proper qualities, and then you can do this different type of procedures. Okay, so now when you talk about the sharp instruments, you should be worried about its sharpness. Okay, and what should be its sharpness? It actually depends on the type of procedure that you're doing. Okay, if you're going to go for bhedana, then it should be masuri matra. Okay, if you want to go for a lekhan karma, it should be ardha masuri matra. And if you want to go for vedana or visravana, it should be kaishaki matra. That is the diameter of an hair, you can say. Okay, so, and if you want to go for chedana, that is the excision, then it should be ardha kaishaki matra. So this should be the you can say the length or the diameter of the or the sharpness of an instrument. Okay, so this is how he explains about the sharpness. And if you want to maintain the sharpness of this instrument, then you can use this shlakshna shila, which is mashavarana. Okay, somewhat blackish color. And to keep the sharpness, that is dhara sansthapanartha, you can use a shalmali falakam iti. So shalmali falak should be used to maintain its sharpness, and to create a sharpness, you can use this slakshna shila, which is mashavarana. So this is how in detail he explains about the only about the sharpness of an instrument. Further, you'll find that he also describes how to hold in particular instrument. This is the detail that you will find only in Sushruta Samhita, how to hold a particular instrument. So if we talk about Vriddhi Patra, or the instrument that we use for incisions, so it should be held at the junction of the handle and the blade. So generally when we hold a scalpel, it is the same way as the Sushruta describes over here to make an incision. Okay, we generally hold the scalpel at the junction of the blade and the BP handle. So this is how a Vriddhi Patra, or the instruments made for use for incision, should be held. If you want to use it for the lekhana karma, that is sacrification, so it should be held with the hand raised a little, so that you can make an action of a lekhana, or you can have a proper lekhana. If you want to use it for abscesses, it should be held at the fore part of the handle. Okay, and if you are draining the abscess in children or in the old patients, then you can use a Trikupchaka for that. You don't need to use Mandalagra or other kind of instruments. If you are holding a Vrihimukha, so it should be held with the thumb and forefinger, and the handle being covered with the palm, so that you can have a proper grip. And if let's say this is an instrument, you can hold it like this and further like this. So you have a proper grip, and you can do the necessary procedure from that. Okay, Kutarika Shastra. You must have seen this particular yantra or shastra in the process of bloodletting, generally in varicose veins. So the proper way to handle it is you have to support it with your left hand, and then support it with your thumb, and just strike it with the middle finger, so it cuts the desired surface. So this is how the Kutarika and Ara and Karapatra and Eshne should be held at their ends, at their extremities, so that you can perform the proper task. Even when you hold a probe for in the fistulas for tracing the track, you generally hold it at the extremities. So this is very apt description of holding the instrument, and you can see the detail and minor it is that he not only explains the instruments in detail, but how to use the instrument. That is only described in Sushruta Samhita. Okay, then the tempering of the instruments to maintain the you can say sharpening, the sharpness of an instrument. So for that, you can either use a kshara, udaka, and tela, depending on the karma or the procedure you want to do. You can immerse the instrument in this particular solution, either kshara, there's alkaline waters, proper only water, and tela. Okay, so if you immerse it in the alkaline solutions, then you can use it for asti chedana. If you immerse it in the water, you can use it for mamsa chedana and vedana. Okay, and if you immerse it in the tela, then you can use it for the siravyad
and other kind of karmas. So this is how you can use it for tempering the instruments or shastrapayana karma. Sushruta also talks about the sterilization, but there is not a specific description about sterilization, but throughout the grantha, when you go through the specific topics, then you'll find the references of sterilization. Mostly he says that Agni Taptena Shastrena, before using an instrument, it should be Agni Tapta. Okay, and Dallana has made the clarification that if you use the instrument without making it Agni Tapta, then there is Paka Bhayam. I mean, it can cause an abscess. So that this is a very frank description of using an instrument before making. I mean, you should sterilize it before using the instruments. This is the frank description of this process of sterilization. Also, Sushruta says that you can use dhupana and rakshogna karma for the sterilization purposes, and he has also mentioned various dravyas for dhupana and this particular process, like gugguda, sarjaras, gorasa, sarshapa, and all nimbapatra. So you can use dhoop of this dravyas to sterilize the your OT rooms, your instruments, or your wards. So sterilization is also taken into consideration while describing the yantras and shastras. Okay. So description of the instruments. Specifically, he has mentioned 121 type of instruments. Out of that, 101 are blunt instruments, that is yantras, and 20 are the sharp instruments. But Sushruta has also said that you can modify or make instruments according to the need and the conditions. So the you can say the total number of instruments can be unlimited. Okay, but theoretically, he has mentioned almost 121 type of surgical instruments. We are not going to go into the details of an instruments, but we are curious to know that what is the importance of these instruments in today's world or in today's era. I mean, the instruments that Sushruta has described in his Samhita, do they still exist in today's world? Or we can say, if are they relevant in today's era? We'll just have a look so that you can have an idea. Okay. So Sushruta has mentioned swastika yantras in the blunt instruments, samdansh yantra, tala yantras, nadi yantra, shalaka, and upayantras. Okay. And in case of sharp, so mandalagra, karapatra, vruddhipatra, nakhashastra, mudrika, utspala, ardhadara, suchi, kushapatra, atimukha, sharayamukha, all those, badisha, dantashanku, eshnya, all those instruments. We are going to see the images of these instruments. We will now try to correlate the instruments that we use in today's era with those that were used in Sushruta Samhita. We'll just try to correlate these instruments. So swastika yantras, and swastika yantras are divided into two parts, one which resemble the mouth of the animals, and one which resemble the mouth of birds. So if you try to find these instruments, so here is the eagle beak forceps, which is again mentioned in Sushruta Samhita. You have this crocodile forceps, again you have a alligator forceps, which are mostly used in ENT surgeries. Then you have this hawker, that is Hansa, hawk-billed tooth extraction forceps, the shape that is mentioned in Sushruta Samhita, and it is still used in today's world. Okay, then lion forceps, that is Vyaghra and Simhamukha yantra, which is again resembles the Sushruta Samhita. Tiger forceps. Okay, this is a crow bill, that is Kankamukha yantra, that has this in Sushruta. This is not used nowadays, but it was used once in the European surgeries in 18th and 19th century. Now this type of instruments are in the museum, but they used to use this particular type of Kankamukha yantras also. So moving further, Samdamsha yantra, we definitely use them. We have dissecting forceps, epilation forceps. Okay, then Tala yantra. So we have different type of scoops. We have different type of curates which resemble that of the Tala yantras mentioned in the Samhitas. Then Arsha yantra, that is obviously proctoscope. This is vaginal douche, or you can say basti yantra or vrana yantra. So this particular vrana yantra, this is used for the irrigation of you can say the wounds, dressing of the wounds. Sannirudha yantra, this is anal dilators that we use today. Badishi yantra, these are the hooks, blunt hooks we still use today. Karpasa, so we use for taking the specimen or the the sample of pus for culture and sensitivity.
Then Kol Asthimatra. This is a typical type of an yantra we use in ENTs. Then Gandupada Mukha. This is kind of a probe, blunt probe we still use. Sharapunka. This is used as, this is a tooth elevator basically. We use it still today. Then Mutra Marga Vishodhanartha. The other uterine, this is the urethral sounds. Okay. And Uttarbasti Yantra, vaginal douche. We use it in modern world too. Okay. Then the sharp instruments, Mandalagra Shastra. It is very much similar to that of tympanoplasty knives, which are again having a circular kind of blade in the front, and we use it for the tympanoplasty. Karapatra, this is a surgical saw. We use it. Then Nakha Shastra, this is nail parer. If you know, we use nail parers in the surgeries of nail extraction or nail removal surgeries. We still use these instruments, and they are quite relevant in today's world too. Nakha Shastra, this is finger knife. We use it in modern world too. Then Utpala, that is scalpel. Ara, that is all. Again, we use it for the various procedures. Badisha, sharp hook. You must have used that in a surgery for skin retraction or other procedures. Dantashanku or dental scraper. Even the tartar scraper is used nowadays in the dental surgeries. So same instruments, we're using it today. Trokars, that is Brihi Mukha Yantra. Then Suchis, we all know that the needles, different type of needles, exactly how they are described in Sushruta Samriddhi. Same kind of needles are still used in the surgery. Okay, so these are the type of instruments described by Sushruta, which again are still relevant in today's world. And basically, we can say that the instruments which were described thousands of years before are still relevant today, and we still use them today. So you can appreciate the way the Sushruta has described the instruments, which are still relevant after thousands of years. Okay, so basically, for if you want to conclude, you can say that in today's world, you have seen a lot of technological advancements. There are engineering advancements. If you know that the fields like medical engineering, biotechnology, these are on the forefront, and various medical instruments have been devised for the surgeons and for our use. But even in this era, the you can say the instruments mentioned by Sushruta Samhita, the techniques that are described by Sushruta, or the ethics and mannerisms and etiquettes towards the instruments that we should have described by Sushruta, they still hold true in today's world. And that is the, you can say, most precious gift that we can have from our acharyas in today's world. And I would say that if we are really loyal to our granthas and our sahitas, probably they will make us the best surgeon in today's world. Because I think in today's materialistic world, our granthas and our sahitas still hold to their moral principles and their ethics. So if we abide our granthas, they will definitely help to evolve us to make us a better surgeon and better, you can say, a person. Okay, so Sushruta, obviously the first surgeon in the world to classify and describe the surgical instruments in detail. And obviously we stand on our on the shoulders of our forebearers, and the appreciation of their heritage is perhaps the most necessary than ever as the innovation rapidly succeeds. Okay, so obviously the description that is given in the ancient classic of Ayurveda in context to Yantra Shastras can be concluded that almost every instrument used in present era, either conducted medical examination or operative procedures, was being used over ages in Shalya Chikitsa. So this way I conclude my my seminar. I again thank Sanghvi sir for giving me this opportunity for presenting the seminar. To you, Sanghvi sir, thank you. Thank you very much, बेटा. मैं कभी अपने आप को गुरु समझ नहीं पाया. मैं इन सब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, ये मैं धन्वंतरी भगवान की, सरस्वती देवी की और मेरे गुरुजनों की कृपा है. समुद्री, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, संदीप कुमार जी ज्वाइन हो गए, आप परमिट करो तो सर को पहले ले ले, उनको सोने का टाइम हो गया है. हाँ, मैं ज्वाइन हो गया सर. समुद्री, विल यू अलाउड मी सर को पहले बोलने दो? मैं तो बस 5 ही मिनट बोलूंगा, 10 मिनट चलेगा सर, आप कर लीजिए पहले. समुद्री, प्लीज वेट फॉर सर. एंड पवन, यू शुड हैव टू शो द स्लाइड आफ्टर फिनिशिंग द सर स्पीच.
Please show my slides. Whatever I'm going to speak is all very well known to this very elite audience. You are all into this. I am only a toddler, a tiny tot. And my guru, Dr. Mahesh Singhi, is here. I've learned this Vidha from him. But I have used it extensively for the last 20 years. Ever since I met Dr. Singhvi in Bangalore once, in Essicon, after that I followed him, and he's given me small little tips, both in the use of Char Sutra for various indications One slide show करो. and sclerotherapy. डाउनलोड हो रही है सर. Okay, go ahead. Koi baat nahi. Take your time. So today I will confine myself to my extended indications of using Char Sutra in several of the surgical indications, surgical situations where I've used it with great success. And I think some of the initial slides are very basic. These slides, which you all know, I will very quickly run through. I know there are many speakers today. While the slides are being loaded, let me first congratulate each one of us and the whole lot of audience on the Jayanti of our great ancestor, surgeon ancestor, Maharishi SUSHRUTA, who was born in Varanasi, where I have met Dr. Singhvi and my guru, Dr. Hari Shukla. And I just saw this very illustrious lecture on the instruments that were there in the SUSHRUT's armory, or let us say in his dictionary or in his description. And it's a matter of great pride for all of us to have assembled here on the Jayanti of Maharishi SUSHRUTA. Can you display the slides now? Slide display हो only provide 1 minute. Only provide. सर ने बहुत सारा आयुर्वेद को मदद किया है. वर्ल्ड नेशनल इंटरनेशनली उन्होंने क्षार सूत्र को प्रेजेंट किया है. He is not a good surgeon. He is a very good teacher also. He established a lot of things in the world. Particularly, he was the former director of the AIMS, Bhopal, and KGMC, Lucknow. And at that time, when I was worked with him at the 75 years of the college, I was there, and because of his 68 surgeon has taken a hand-on training program for the Char Sutra. But he's a good surgeon. We established it in Bhopal. I'm glad somebody from Bhopal is also sitting in the audience. So those are my slides. So I am there. Excellent. So that slide just shows some Char Sutra being dispensed in various ways. Next slide, please. Now, these are the standard surgical textbooks. The Association of Surgeons of India textbook, the Bailey Love, Kusheri, about 5 very standard international textbooks where you can see Char Sutra has been mentioned, not as a Ceton, but as a Char Sutra. This is the picture of Professor M.C. Mishra, retired director, AIMS, New Delhi, who came and presented his work on Char Sutra and Ceton in Fistula in NO, which was published in British Journal of Surgery. The paper is here. And we invited him to King George's Medical University, Lucknow, about 15 years ago, where he delivered an oration. And Dr. Singhvi was also there. Next slide. Next slide. Agli laga di. And this is my guru, Dr. Mahesh Singhvi, with whom I have learned, जिसको कहते हैं कि इस विद्या की बारीकियां. And every time I ring him up, I get enriched. He will give me a little new sukti.
a new, insight into the use of Char Sutra. Every time you meet this gentleman, he would have something to teach you. So my hand folded naman and pranam to Dr. Singhvi. Next slide. This is the workshop which we did in KG Medical University, and you can see Dr. Arshad is here. Dr. Arshad got interest. Now he's a renowned anorectal surgeon, and he got interested in common anorectal problems while he was just a student, and he's standing exactly next to me on my left. Next slide. Next slide, Lagat. Now, the gentleman here is Dr. Masroor Ali. Dr. Masroor Ali has written he practices in Michigan in America. Agli slide laga dijiye. And he has written a monograph on hemorrhoids. And he came to Lucknow for a workshop. And he is the first person जो डॉक्टर सिंघवी ने नहीं किया, इन्होंने किया. इन्होंने अपना एक ऑपरेशन पेटेंट करा हुआ है और इनकी ये हेमरॉइडल क्लिनिक है मिशिगन में. आप देखिए ग्रीनफील्ड रोड ओक पार्क के ऊपर, और इन्होंने अपना नाम वहां पे मैक्स अली कर लिया है. और ये लखनऊ के बाशिंदे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, और इनका नाम है मसरूर अली. वहां पे ये MM अली कहलाते, मैक्स मसरूर अली. और इन्होंने चार सूत्र का ऑपरेशन सीखने ये हमारे पास आए और बहुत खुश होके गए और बोले कि मैं अमेरिका में करूंगा. पता नहीं उसके बाद किया नहीं किया, मैंने I have not kept track of him, but this is what happened in 2003 when he came, and Dr. Singhvi was there, Dr. Mishra was there in the Department of Surgery at King George's Medical University. And ever since, at least I have continued using this method of treatment. Next slide. Next slide, sir. पवन सर बोलना शुरू करे तब चेंज कर दे. ये कई रिसर्चेस हुए हैं जो अभी महेश सिंघवी साहब कह रहे थे कि इसमें, और ये छपे और इंटरनेशनली पब्लिश हुए हैं. अगला स्लाइड. तो बस अब मैं 2-3 स्लाइड में आपको बता दूंगा, बाकी तो इस विधा को आप लोग सब जानते हैं. नहीं सर, मैंने कहाँ इसका इस्तेमाल किया है. अदर देन चार सूत्र जो आपने किए हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ चार सूत्र, बाकी का सब छोड़ दीजिए. और जो आपने अदर देन फिस्चुला में जो ट्राई किया वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जरूर दिखाएं. बस तो ये बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चार सूत्र was described by Sushrut 500 BC. मेडिकेटेड कॉस्टिक सूटन है, अल्कलाइन है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, स्टेंट है, विक है यानी कि बत्ती की तरीके से काम करता है. इसमें कैपिलरी एक्शन है, केमिकल कॉटरी की तरीके से काम करता है, 5 से 10 mm पर वीक काटता है, लो कॉस्ट है, इकोनॉमिकल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. स्किन में रेडनेस एलर्जी हल्की बहुत होती है, एनाटॉमिकल डेलिनेशन करना पड़ता है डॉक्टर साहब की तरीके से, ब्लू इंक से या इंडिया इंक से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, मेथिलीन ब्लू से. मेजर सर्जरी अवॉइड हो जाती है, कोलोस्टमी अवॉइड हो जाती है, एंटीबायोटिक ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ब्लीडिंग नहीं करता, इनकॉन्टिनेंस नहीं होता, स्ट्रिक्चर नहीं होता, क्योर रेट 99% है, एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल स्टे बहुत शॉर्ट है. नेक्स्ट स्लाइड. आखिरी स्लाइड है, बस ये दिखा देता हूं आपको. नेक्स्ट स्लाइड. ये कैसे बना है ये आप लोग जानते हैं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ. नेक्स्ट. सीधा ट्रीटमेंट पे आ जा, ऑपरेशन ट्रीटमेंट पे जाने दे, आगे जान दे, आगे जान दे, ये इसको जरूरत नहीं है. जाने दीजिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं स्फिंक्टर का एनाटॉमी. मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज. ये क्लासिफिकेशन ऑफ फिस्टुला है एंड है ये तो. Okay. नहीं नहीं नहीं, चार स्लाइड ब्लैंक है बेटा. बस वो लास्ट स्लाइड थी जो लास्ट अभी गई. आगे चलो, आगे चलो. आगे है ही नहीं. तो एनल फिस्टुला में नहीं नहीं, यहाँ से है ना, 26 नंबर से शुरू कर. क्रॉनिक ब्रेस्ट एब्सेस में यूज किया है इसको, क्रॉनिक ग्रैनुलर मेस्टाइटिस में यूज किया है, एम्पाइमा में यूज किया है, इंजेक्शन एब्सेसेस और साइनस. बस आप ये तो चलने दीजिए ना, ये तो आगे चलने दे, स्लाइड आगे चलने दे. नहीं, पीछे जाइए, पीछे
हाँ या अरे वहां नहीं बैठ नहीं जा, पीछे अर्जुन एक बैठ जा. let me direct Dr. Singhvi, let me direct. Okay sir, मेरी okay, बात sorry sir. बस एक स्लाइड है वो आती है और आप हटा देते हो. एक ही स्लाइड है आप उसको हटा देते हो. नहीं नहीं सर आप आगे बढ़िए. 30 ऊपर जा, ऊपर नहीं नेक्स्ट जाना है, नीचे नेक्स्ट जाना है, लेट मी एंड डू की इट. तरफ जा. बस नेक्स्ट ठीक चल रहा है, ठीक दिशा में है, दिशा ठीक है. नेक्स्ट 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 सर आप हाथ मत चलाइए. नेक्स्ट 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 बस यहां रोकिए. ये मेरे इंडिकेशन है. अरे वहां रोकना था. हाइड्रेट नाइट्रेट सप्रेटाइवा में इसको यूज किया है डॉक्टर साहब. एनल फिस्टुला में यूज किया है. मेश जो छूट जाती है, मेश ये बहुत तंग करती है सर्जन्स को. जब इन्फेक्टेड हर्निया मेश में यूज किया है. लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद इन्फेक्टेड लेप्रोस्कोपिक वुंड में यूज किया है. और क्रॉनिक ब्रेस्ट एब्सेस में और निपल एब्सेस में और एम्पाइमा में ये इंडिकेशंस है. थैंक यू. Sir, what is your experience about liver abscess? We have tried in Lucknow under you. सर जो क्रॉनिक लिवर एब्सेस है ये केस है. यही रुके रहे. अरे हटा देते हैं आप. ये देखिए लिवर एब्सेस था. ये देखिए लिवर एब्सेस है. लिवर एब्सेस में हम एक तार के अंदर जैसे मूंछ होती ना, 4-6 क्षार सूत्र को लिवर एब्सेस के अंदर डाल देते हैं और उस तार को स्किन से फिक्स कर देते हैं. तो लिवर एब्सेस कैविटी धीरे धीरे कोलैप्स कर जाती है और क्षार की औषधि लिवर के अंदर पहुंच के लिवर एब्सेस को हील करा देती है. इसके बाद में आपने लंग्स में ट्राई किया था, नेक्स्ट स्लाइड में है जी. एक लंग एब्सेस में भी ट्राई किया और लंग एब्सेस के हम 4 केस कर चुके हैं और इंजेक्शन एब्सेसेस और साइनसेस में भी कर चुके हैं. ये इंजेक्शन है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत समय दिया. मैं आपका आभारी रहूंगा, जिंदगी भर नॉट आपका एट ऋणी ऑल रहूंगा सर. सर. मैं आभारी हूँ. Thank you, sir. Thank you very much. So, can I proceed with this, Samudri? Next speaker, listen him, sir. Please give me a 10 minutes for me more. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत धन्यवाद आप. Samudri, are you ready? You can start your speech, Samudri, please. You can start, Samudri, please. Voice is not coming. Your voice is not coming. Thank you, sir. Thank you. Samudri, and we have worked number of the time in all over national calamities. He's working with the Red Cross Society, and one of the special beauty, he do the free camp for this Nilito Prakash phimosis ke operations ke, and very social and expect very good teachers. He has a very good followers, his students. So now the platform for Samudri. Samudri, start yourself, please. No voice, please, Samudri. Recheck. No voice. हेलो डॉक्टर समुद्री. You are stuck up somewhere. Take assistance somewhere. Your mic is not working, or if you have joined with mobile, I don't know what is the glitch. We can hear you, Dr. Samudri. I can see you and I can hear you.
हैं? but आप we दिखाई cannot, भी sir. पड़ गो एट स्पीक। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। Sir, we are not getting his voice. Dr. Samruddhi, just please check your connection. We are not getting. महेश जी आप आवाज पा रहे हैं? हाँ नहीं, मुझे भी नहीं आ रहा है सर। Right. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है समवेयर। Sir, मैंने तो ईमेल से खोला है तो आवाज आ रही है। सर अभी यस, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, आपके कमरे में दो खुले हुए हैं, आवाज बंद कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए। आवाज आ रही थी आपकी? अभी नहीं, वो जो खुला था उससे आवाज आ रही थी। कंप्यूटर का माइक म्यूट कर दीजिए और उससे आप बोलिए मोबाइल से। कंप्यूटर का माइक और स्पीकर म्यूट कर दीजिए, मोबाइल से बोलेंगे तो आवाज आएगी। पहले इसको भी अनम्यूट करके रखिए, शायद आवाज आ जाए। मोबाइल से बोलिए। सर नाउ? We can hear you. Can you hear, sir? Yes sir, loud Yes, and sir. clear. Okay. Without wasting time, I will go ahead. I'm going to next slide. I'm going to talk about the different incisions told by Acharya Sushruta in different conditions and diseases, and especially going to highlight the incisions which I practice, 8 type of incisions in Bhagandra, fistula and nano, which has made very easy, and in a single shot you can operate the fistula and nano. Next slide. आप बोलते रहो। You can Slide go आया for नहीं आया, आप slide बोलते show. रहो। Yes, I can. स्लाइड शो, नीचे बटन पावर पॉइंट में हो जाएगा, डोंट वरी। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं मेरे गुरुजनों की, मेरी खुद की कलीग्स और मेरे जूनियर सभी के बीच में मैं ताज का साक्षी रहा हूँ। ये लोग मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मैं उसके काबिल नहीं हूँ। और आज मैं अभिनव को जिस ढंग से प्रेजेंटेशन करते देखा तो मैं एज ए पुत्रवत देखता हूँ, तो मैं उसने मेरे को आज हरा दिया है। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जिस लेवल पे मैंने उनको देखा था YMT में और आज जिस लेवल पे है, मुझे गौरव है कि उन्होंने अपने आप को इतना सा कहीं से जहां से उसके ज्ञान मिला होगा, अपनी त्रुटियां को ढूंढकर उसने इम्प्रूव किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं उम्मीद करूं ठाकुर जी से कि वो खूब सफलता प्राप्त करे, यश करे, माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों उसके पास रहे। समुद्री अगर स्लाइड नहीं होती तो बोलना शुरू कर दे। I will go on speaking on the topic. If that slide, next slide, it's not going, some technical problem. Forget about the slide, you just And start to meanwhile- speak. व्हाट्सएप ले लो आप। What? I will stop sharing and then I will share it again. Meanwhile, my student is doing that work. I will be speaking on the topic. किसी असिस्टेंट को काम पे लगा, तू बोलना शुरू कर दे। Yes, the principles of incisions Acharya Sushruta has mentioned. So in there he has told for the first time that 2 words we use, chidvidarane, chedana and bhedana, to chidvidarane to cut and vidvidarane to divide. So these 2 principles we use, and how the incision is planned. आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराश्रयः प्राप्तकाल कृतस्य अपि ऋणकर्मणि शस्यते. So ayata,
Vishala. So it is not too big, not too short. Adequate incision on appropriate time on appropriate anatomical site. So this is the word Sushruta has mentioned, looking into the inflammatory conditions and non-inflammatory conditions and taking the cosmetic value into consideration. Sushruta has mentioned this. And next he says, Tatra Bruganda Shankalalata Akshiputa Dantaveshtaka Kaksha Kukshi Vangshaneshu Tiraksheda Uttaha Chandramandalavat Panipadeshu Karaye Ardhachandrakritim Sapi Gudametracha Buddhima. So he has mentioned that on which anatomical site which incision has to be taken. Okay. Tatra Brugandal Shankalalata Akshiputa Dantaveshtaka Kaksha Kukshi Vangshaneshu Tiraksheda. Oblique incision on these anatomical sites and circular incision Chandramandalavat Panipadeshu Karaye. He says to take on the palms and the foot. So this round circular incision, Chandramandalavat. Ardhachandra Akritim Chapi Gudametracha Buddhima. So Ardhachandra Akriti, semicircular incision on Guda and Medra. We'll leave about Guda, Medra and other anatomical sites. We'll talk only about the Guda. So where this Bagandhara is the most challenging disease what every surgeon face in their practice. If you do not take, Sushruta was very much particular about the cosmetic value, and while operating, he was, when he has mentioned the surgeries, he was a great anatomist also. What structures we come across, how to cut the structure, how to divide the structure, where to divide, where to cut, that he has mentioned. So here he tells about if these said incisions are not taken on anatomical sites, so what will happen? Anyatha tu sirasnayu chedanam chiratruna samroho mansakanda pradurbhavas chati. So he has told chiratruna samroho means wound will take more time to heal, and there is Chiratrana Samroho, Mamsakanda Pra. There is a complication post wound. There is either it is a contracture or there is a keloid formation. And Atimatram Vedana. So there is a more pain. So if we take a proper incision on proper time on appropriate anatomical site, that's going to prevent all these things, all these complications. This is what Sushruta says. And based on that, I have adopted the 8 incisions what Acharya Sushruta has mentioned in management of fistula in Nano. There he has mentioned Langalaka, Ardhalangalaka, Gotirthaka, Sarvato Badraka, Suchi Mukha, Avanga Mukha, Karjura Patraka, and Ardhachandraka. The total 8 incisions have been mentioned by Acharya Sushruta. Let us consider the first one, that is Langalaka. Langalaka, how it can be understood and where it can be adopted. Langalaka is Langalaka Halam iti, he has mentioned. Okay. Langalako Halam iti. Dalhana comments on that. Halam iti. So हम लोग हल कैसा चलाते हैं? So उस that type of this wound is created by taking the incision. So तुम्हारे प्रेजेंटेशन में 2 ही स्लाइड है, आप बोलते रहो, फिर बाद में देना, YouTube के ऊपर हम इंक्लूड कर देंगे. इसमें आपके पास 2 ही स्लाइड है. नहीं सर, है सर, फर्दर स्लाइड. Okay, fine, forget about it, continue read. We will be posting the YouTube presentation. Excellent, excellent. Go ahead. So now this can it be visible, or is that okay? Yes. Make a full screen and talk about the incision only. Forget about past one. Yes, sir. Yes. Yes. One incision, how practically we adopt this Langalaka and Ardha Langalaka, that I am going to tell you now. So this is a historectal abscess where the conventional surgery, a cruciate incision is taken on the most dependent part, and then it is divided. The pus locules are broken.
So this is the conventional. And how best? So this is one case I am going to explain you here. It's a bilateral hysterectal abscess. So a female case, a bilateral hysterectal abscess. So now I will tell you how to take an incision in this. Yes. So this is where the incision is taken at the posterior anorectal junction, intersphincteric junction, intersphincteric groove. Exactly, only the skin is taken only at the skin level. Incision is taken only at the skin level. Later, it is divided. You can see only the skin level incision is taken. Later, it is divided. Just with the sinus forceps, it is divided. The sphincter is divided. It's not cut here. And then you can see the intersphincteric groove. My finger, left finger can go up to the left hysterectal fossa, just at a 1.5 centimeter adjacent to the median raphe. And either side, when you take one side, the incision at one side, this is called as ardhalangalaka, that half portion of the hysterectum is covered. And this side, entire, this side, now left side, right side. So right side, again, you can see the finger. So this is the site of the abscess. And after this, when both the side, when you take the incisions, so this is langalaka. One side, ardha langalaka, when both the side is taken, either side, so then it is langalaka. So then ksharkarma is done. Then it is neutralized with the lemon juice. And then pichu is kept. So this is how 2 incisions we can practice in hysterectal abscess. So later wound heals, and this is a posterior abscess. This is not a case. Later wound heals. I will show you the healed cases at the end. So this is another case of fistula. So here you can see, earlier I used to use the probes and now I stopped using probe. So you can see at 7 o'clock there is external opening and its internal opening is, there is no internal opening, but it is coming up to the 6 o'clock position. So in this also you can see the ardhalangalaka incision. Ardhalangalaka incision is taken. And once it heals, see, it leaves a very small scar at the 6 o'clock position. And this is another case, healed case. You can see a scar here, a langalaka incision, and these are the 2 fistulous, external fistulous openings which are almost dry. This is almost healed, and this is just taking the process of healing. Another case I will show you here. This is the site of surgery, but this was the external opening, and this is almost healed, and there is no disturbance in the anorectal area, anatomy. And then comes the Gotirthaka and Sarvatobhadraka incisions. Gotirthaka is Gomutra Gati Sadrusha. So where it's a branched incision, you can say it is a branched incision. And Sarvatobhadraka is Sarvatobhadrako va api karyo Gotirthako api. Yatra tu sarvadisham agacchati shastram sa Sarvatobhadrakaha. So you can see here how this wound is created. This is a median raphe. Median raphe, it is left, and at 1.5 centimeters either side we have to leave, and you can take the incision in the intersphincteric groove, complete intersphincteric groove. There is no fear of incontinency here. And this is the anal verge. This is the anal verge. So this is the Sarvatobhadraka. Gotirthaka I can show you, Gopada Sadrusha and Gomutra Gati Sadrusha. 2 types we can understand. And Gotirthaka, another word is there. That is cow's vagina, which resembles the cow's vagina. 3 meanings we can draw from this Gotirthaka.
So all three we can practice. See, after healing, how it looks. So next comes is Ardha Chandrakriti. Ardha Chandrakriti is this is one very what made me, or why I shown special interest on these incisions is it is mentioned in Sutrasthana 5th chapter, where the basic surgical skills mentioned by Acharya Sushruta are discussed. So there, Ardha Chandrakriti Chapi Buddhametracha Buddhiman he has told. So why he has told in that chapter, that is a very basic principle. So it can be adopted. So how this Ardha Chandrakriti? Look here, this is the Ardha Chandrakriti incision. And then you divide the sphincter here, either external or internal sphincter. It is going high anal, but it is in a single sitting. You can operate this without damaging the sphincters. So this is another one I wanted to show. This is how we can practice. Another one case I will show you. See, Ardha Chandrakriti. This is the external opening. So over the intersphincter groove, this Ardha Chandrakriti incision is taken. See how you can dissect it. Complete a linear track or curvy linear track, you can completely dissect. Complete dissection you can see here. And once it is dissected, so it is, you can, if there is no infection, only the track is there, you can suture also. So once you suture, so it heals. This is how it looks like. And to conclude, I think I will possibly I will show the incision videography of the surgery. It is simple, very less bleeding. Comparing to the dissection of the conventional surgery, what we go, it is a very, there is less bleeding and less pain. So whenever there is pain in the post-operative management of post-operative case of a fistula in ano, if patient complains of pain, there is some problem with the procedure. Because either the abscess cavity is left as it is, or there is tight sutures with the sphincters, or sphincters are involved in the sutures. So then patient will have very agonizing pain, intolerable pain. So if you practice these incisions, very less pain and no ugly scar, and you are not going to disturb the anatomy, and there is no puckered scar or ugly scar, and no threading and changing. So thread changing, Char Sutra, ultimately, yes, I am not against the Char Sutra, but thread changing, some people, nowadays what we are facing, earlier 10-15 years, thread changing was not a big issue, but thread changing in high profile or sophisticated patients is really a big task and very challenging, very painful it is. And can be sutured, the wound can be sutured if you are if you have completely excised the tract without leaving a single cell. So Ardha Chandrakriti, what I would like to say is it can be practiced in all types of low anal, transanal, transpintric, all type of fistula in that is why it is the king of all the incisions, and there is no fear of incontinency. Why there is no fear of incontinency, I would like to clarify here. Here we are not cutting the sphincter. We are dividing the sphincter. Either it is internal or external sphincter. External sphincter, 1/3 can be compromised. That is not going to lead to the incontinence. But if you excise more than that,
So it is going to affect the continency of the patient. So in fistula in nano, what is the role is, or a role of a surgery, role of SUSHRUTA, or role of these incisions is, you do surgery, let the disease reoccur, but there should not be incontinency to the patient. So once the incontinency, again it is going to make a lot of problems. But these incisions, they are so safe that there is no fear of incontinence. Okay. Yes. With this, I would like to, before I would like to conclude. So I will display the video clippings. And any questions or queries, they are most There is welcome. no question. There is no question. Sandeep Kumarji, still video run. Your comment, please. Yes, sir. Good. I mean, I quite agree that changing of the thread can be very painful experience for some. Yes, sir. And if fistula can be excised without damaging the sphincter, as the speaker said, fistula excision is a very good surgery. It's a very good surgery. Well done. Thank you. Thank you. Sir, the success of this program is, this technique of incision is that we applied the local Pratishani Aksara, the gist of what we applied to the Aksara Sutra. So the remain unhealthy granulation in cellular level, it has been, drained by this chemical cauterization. So the less pain, less secondary septicemia, and less, the recurrence rate. So this is the beauty of, the combinations of the brain at a one time. Thank you very much, sir. And what about the Yantra Shastra? What is your opinion about my Abhishek? You're asking me? Yes, sir. I'm requesting you the comment of my young blood who will see the next generation Ayurveda in a different level. The yantras are good. I mean, Please I'm very mute happy to everybody. see Please mute everybody except then, sir. I quite agree that, as you Any said, that you co-host can mute. excise the subsphincteric part of the fistula, and in suprasphincteric part of the fistula, you can still put a charsuit. So within 1 or 2 changes, it will cut through in you. most of the cases. Thank you, sir. But I Samudri, didn't are get you your ready? last question. I didn't get your last question, Dr. Singhvi. Sir, what is said that, are you agreed that the description of my junior has done, it has been very satisfactory to you? Absolutely. Wonderful. Thank you very much. Samudri, my platform is yours for you. Thank you very much, sir. Thank you. So Yes, on sir. behalf of concluding that, from my side, I'm great honor Dr. Sandeep Kumarji has spent a time and given an importance of Ayurveda being an internationally renowned surgeon and the chief editor of the Indian Medical Journal of Surgery, Indian Surgery, the gazettes, as well as he's a very social man. He has done a lot of social work into the society, and I appreciate that he has 3 or 4 Ayurvedic assistants under him. Everything is going well. Am I right, sir? That's right, sir. Thank you. Thank you very much. Samudri, are you Really, ready? we are blessed that Sandeep sir is So with us. my pleasure. My pleasure. Thank you. So this is one Ardha Chandra Kriti with multiple openings and a single. And previously I have shown the healed scar. Run the video, please, Yes, sir. because everybody want to sleep. तब तक सर आभार विधि कर लो. कौन सर अपने डिपार्टमेंट की तरफ से? जी बिल्कुल. पवन.
ये दुकान चले तब तक आभार विधि कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। अरे होता है, सब कुछ सब होता है यार, सीनियर पहले डेजर्ट एक्सपर्ट खा है। लो। अरे सब 70 साल के ऊपर के सीनियर एक्सपर्ट है मेरे साथ। मेरी पैटर्न पे आप लोग एंड कर लीजिए, फिर अपन कर लेंगे। नहीं, हम भी 70 साल के ही है, कम नहीं है। वही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, एज यू विश, एज पर योर प्रोटोकॉल। आप कहाँ से 70 के हो गए महेश भैया? आप कहाँ से? 67 रनिंग है गुरुजी। गजब है, गजब है, गजब है, 56 बॉर्न है सर। गजब है। आप लगते नहीं हो बिल्कुल, लेकिन भगवान करे शुभकामना है। ऐसे ही 100 साल तक रहो। आयुर्वेद जिंदाबाद। क्या हुआ समुद्री जी आपका? अगर नहीं चलता है तो दे दे, ओपन करके हम लोग यूट्यूब में डाल देंगे। हर बार तो ऐसा होता नहीं, आज क्या बात है? अच्छा खाना नहीं खाया क्या आज? इट्स वेरी ऑब्वियस, वो अर्धचंद्राकार कर्वीलिनर इंसिजन लगा के मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग्स को आप एक कॉमन ओपनिंग बना के निकाल लेते हैं। दैट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू डू। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। वो मुझसे भी ज्यादा टेक्निकल होशियार है, लेकिन पता नहीं आज धोखा दे गया टेक्नोलॉजी। कोई बात नहीं, होता है, होता है। कभी कभी टेक्नोलॉजी हम पे सवार हो जाती है सर। ये दोनों बच्चे टेक्नोलॉजी में मुझसे बहुत होशियार है, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ उन लोगों से टेक्नोलॉजी वाइज। कहीं ना कहीं या तो मेमोरी की कमी है, या बहुत देर से कंप्यूटर खुला हुआ है, इसलिए वो मेमोरी उसकी कंज्यूम हो रही है। यस यस। अपने जो पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म है ना, उसका अभ्यास करो। मैं आदरणीय अग्निहोत्री सर से ओपन सेशन में प्रार्थना करने की गुजारिश। वीडियो चलेगा तो हम लोग रुक जाएंगे, लेकिन 11:15 हो रहे हैं। सब पवन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सिंह जी साहब के विनोदपूर्ण, हास्यपूर्ण विनोद के कायल हो गए। मतलब सर्जन फास्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो चाहते हैं वो जो टेक्नोलॉजी वो भी उनसे फास्ट हो जाए। अब नहीं हो रही तो नहीं हो रही, क्या। और रही बात जहाँ तक उसका सवाल है, दशहरा के दिन घोड़ा दौड़ना चाहिए। मोरओवर एक चीज आपने और बढ़िया कही, तो उसके लिए तो मेरे को खाली इतना कहना है, तेजशाम न वया समीक्षिते। तेजस्वी लोग हैं, उनको 67 के हो, 167 के हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उनका ज्ञान की राशि इतनी गहरी है कि वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते। इंसिजन लगाना है तो बेचारे तुरंत ओटी में प्रिपेयर होके आ जाते हैं। ये आपका कितना आभार है मानवता के लिए। और इतने इतने हमारे सीनियर्स, हमारे मतलब आयुर्वेद के प्रति रुझान रखने वाले हमारे प्रोफेसर, मैं तो उनका देख गया कि KGMC से लेके भोपाल एम्स तक में आज वो पिछले 20-30 साल से आपके, और देखिए आपके प्रति कितना अम्बल है। वो कह रहे आपने सिखाया, मतलब ये अपने लोग गौरव की बात है। उनका बड़कपन है सर, ये उनका बड़कपन बिल्कुल, है। मैं उसका यही ऋणी मैं हूँ सर। बहुत अम्बल है वो। और उन्होंने रियलाइज किया कि उसके बाद उन्होंने अच्छा बनाया। तो सेशन ओपन हो चुका है आज। अभी भी इस समय हमारे देखिए 11 बजे जा रहे हैं, करीब करीब 34 लोग जुड़े हैं सर। प्रोफेसर मार्शन सर नमस्कार, प्रणाम सर। वासने सर आए तो उनको भी प्रणाम में बोलना भूल आगे गया। प्रणाम सर, आप म्यूट है। हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। प्रणाम है, स्वागत है सर। तो आपसे ही फिर शुरुआत कर लेते हैं। आप हमारे पुरोधा हैं सर्जरी में, और सभी हमारे सुश्रुत पुत्र हैं, भरत पुत्र हैं, और धनवंती जयंती की सुश्रुत महर्षि की जयंती के उपलक्ष्य में आप सब लोग जुड़े। बहुत बहुत आपका आभार है, विशेष समय का बहुत ही ज्यादा। तो आप शुरुआत करिए। आज आप थोड़ा आज की प्रेजेंटेशन पे थोड़ा आप दीजिए, अपने कुछ वचन दीजिए, फिर हम तब तक आपने, और हाँ इनका खुल रहा है। आप बोलते रहिए ना जब तक खुलेगा। हाँ, तब तक सर। वर्षे सर आप बोलिए, जब उनका चालू हो जाएगा तो पहले तो मैं एक शिकायत कर रहा हूँ आप लोगों से
ये कल भगवान। कल आपने इनविटेशन दिया और लिंक नहीं भेजी। मैंने संघवी को फोन किया 9:15 बजे, तब लिंक आई मेरे पास। तो आगे से लिंक भेज दिए तो अच्छा रहता है, हम लोगों को फायदा रहता है, सुनने में अच्छा लगता है, नई पीढ़ी बोलती है। तो आज का जो ये हुआ अपना बहुत ही अच्छा हुआ। और दिखा रहे हैं क्या आप? सर आप एक कृपा आप कर चालू दीजिए, रहिए जब तक खुले नहीं। अपना नंबर चैट हाँ, पर छोड़ तो दीजिए, मैं अपनी नोट कर लेता हूँ। ये यंत्र मेरी शस्त्र जिम्मेदारी के, है, मैं आपको लिंक भेज दिया करूंगा टाइम से। यंत्र शस्त्र के ऊपर जो पहला अच्छा, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने पढ़ा। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं प्लास्टिक सर्जरी का कैंप हो रहा था, तो प्लास्टिक सर्जन अशोक गुप्ता बम्बई में है, उन्होंने पूछा भाई सुश्रुत ने क्या बताया इसके बारे में। तो मैंने बोला सुश्रुत कोई फादर ऐसी नहीं बोलते प्लास्टिक सर्जरी का। उन्होंने बोला था गंडात उत्पाट्यमान से न सानुबंधेन जीवता, जो है ब्लड से पेडिकल जो लेते हैं वो वहां पर अलाइव रहना चाहिए। और 3 सिद्धांत जो आज भी प्लास्टिक सर्जरी में है, नचा रक्तम, अशुद्ध रक्तम, हीन रक्तम, एवस्क्लोसिस नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, और वहां पर जो है बिल्कुल परफेक्ट ब्लीडिंग होगी, तभी जाके यूनियन होगी। अब यंत्र के बारे में जब पूछा मुझसे कि आपने लेप्रोस्कोपी के बारे में क्या सुश्रुत का वर्णन है, तो मैं बताता हूँ। एक लेप्रोस्कोपी का जो इजाद हुआ, सुश्रुत ने नाड़ी यंत्रों के जो कार्य बताए हैं, रोग दर्शनार्थम, आचूषणार्थम, क्रिया सौकर्यार्थम, स्रोतोगत सदलोधार्थम, ये 4 जो फंक्शन होते हैं, टू विजुअलाइज द पैथोलॉजी, टू एक्सट्रैक्ट द पैथोलॉजी, टू सक्शन, और टू मेक इजी प्रोसेस। तो लेप्रोस्कोपी में ये 4 ही चीज करते हैं जो सुश्रुत ने हजारों साल पहले ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताई। और जैसा कि वक्ता ने बताया, कोई लिमिट नहीं है, अपनी बुद्धि के हिसाब से आप इसको इजाद कर सकते हैं। दूसरा जो क्षार सूत्र के बारे में, फिशुला के अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे वर्णन बताए, ब्रेस्ट एब्सेस, लिवर एब्सेस, लंग एब्सेस, बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने भी बताया, डॉक्टर संघवी को पता है, पेपर भी पढ़ा उन्होंने, पेडुंकुलेटेड ग्रोथ, क्रॉनिक अल्सर्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसमें भी इनका बहुत अच्छा क्षार सूत्र का उपयोग हम लोग करते हैं और देखते आए हैं। तीसरा पेपर अभी जो आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन, लांगलक, अर्ध लांगलक, गौ तीर्थक, सर्वतोभद्र के बारे में जो प्रैक्टिकल उन्होंने बताया, वो वास्तव में हम सबके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और एक नई जान उन्होंने डाल दी आज के सेशन में। बहुत अच्छा लगा उनका प्रेजेंटेशन देख के, और मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा ये उपक्रम शुरू किया है, और इसमें आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बोलने का मौका दिया यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। समुद्री, आर यू रेडी? ओपन इट। ये मंच आपका है सर, बोलने का मौका। हम आप लोग हमें आशीर्वाद का मौका दे रहे हैं कि हम आशीर्वाद देते रहिए सर, हम आपके प्रणाम रहेंगे, आपके गुरु, आपके चेले रहेंगे सर जिंदगी आप भर। जुड़ते रहिए रोज सर, रोज जुड़ते रहिए। आएंगे सर, आएंगे सर, जरूर आएंगे सर। रोज रात को 8 बजे से 2 वेबिनार। समुद्री, यू कैन क्लिक एंड स्टार्ट प्लीज। सर नमस्ते सर। वो नहीं कर पा रहे हैं। संघवी सर नमस्ते। नमस्ते राजकुमार। There is some technical problem. Tomorrow I can ओपन करके I will show the video. समुद्री लिसन मी, ओपन करके जितना भी तेरा प्रेजेंटेशन वो वगैरह है, वो मुझे और वो पवन को भेज दे। जब YouTube हम बनाएंगे तो उसमें हम डाल देंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूर्णाहुति करते हैं धन्वंतरी और सुश्रुत भगवान की। थोड़ी सी हमारे डायरेक्ट चल रहा है सर, यूट्यूब पे डायरेक्ट चल रहा है, लाइव है, इसमें डाल नहीं सकते। नहीं, पूरा नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि समुद्री की तरफ से एंड है, अभी अपना जो बाकी की विधि है वो आप करें। हाँ जी, अग्निहोत्री सर आपका। जी सर, जी सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बासनी सर का एक और अच्छा काम मैंने बताना चाहता हूँ कि थियर्स ऑपरेशन के जगह वो थ्रेड के बजाय खारसूत्र देख के किए थे। ये एक अच्छा उनका एक्सपेरिमेंट था। सर को मैं याद कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो है थियर्स की जगह क्षार सूत्र उपयोग करते हैं, और क्षार सूत्र को 3 हफ्ते बाद निकाल देते हैं। तो एक तरफ क्षार सूत्र हमारा फिशुला ठीक करता है, और दूसरी तरफ क्षार सूत्र से फिशुला या फाइबर ट्रैक बनाते हैं। और फाइबर ट्रैक से फायदा ये होता है कि थियर्स में जो वायर या जो कैटगट या स्टेनलेस वायर डालते हैं वो परमानेंट रहता है, लेकिन इसमें क्षार सूत्र परमानेंट नहीं रहता है, और नेचुरल रिंग, फाइबर्स रिंग बन जाती है, इंस्टिंक्टर टोन इंप्रूव हो जाते हैं, और बहुत से पार्शियल प्रॉब्लम्स 100% ठीक हो ही जाते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। धन्यवाद सर। अग्निहोत्री सर। सबसे पहले तो प्रोफेसर वार्ष्णेय जी आदरणीय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि
मतलब इस समय भी वो हमारे साथ हैं और बड़े उत्साह के साथ साथ में है। आपने आप वचन दिया, आप हमें बस अपना नंबर दे दीजिए, मैं उदय के जरिए या आपको डायरेक्ट लिंक समय से भेज दिया करूंगा। और आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि हमारे छात्रसूत में जो हम लोग जब पढ़ते थे वहाँ, और अपनी जो छात्रसूत एनुअल क्लिनिक अलग ही हुआ करती थी, इसमें अलग डिप्लोमा कोर्स भी था, और प्रोफेसर कवि रत्न शर्मा जी के साथ में सारा चलता था, साहब एलम सिंह साथ में। तो कटिंग एंड हीलिंग एक ही फॉर्मूला था। इसका सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है कटिंग एंड हीलिंग। लेकिन यहाँ तक हमारे सुधीर सर ने बताया कि वो मतलब ब्रेस्ट के मामले में भी, लंग्स के मामले में भी, इवन लीवर के मामले में उन्होंने छात्रसूत के उपयोग करके जो आगे विधा बढ़ाई है, ये निश्चित रूप से हमारे छात्रसूत के जो एप्लीकेशन है उसका बहुत बड़ा उपयोग रहा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ में जो आज की इसमें अपनी इस प्रभाष पटल में जुड़े हुए हैं, उनमें से हम मैडम पारुल जोशी जी को लेते हैं कि उनका भी क्षेत्र, जैसा कि उन्होंने माना कि हम आचार्य सुश्रुत हमारे सबसे बड़े एक आदर्श रहे हैं, तो मैडम पारुल जोशी को हम बुलाते हैं, आदरणीय उनको आमंत्रित करते हैं। और समय को देखते हुए, क्योंकि हम लोग 8 बजे से जुड़े हुए 11 बज रहा है, थोड़े समय लेते हुए आप सभी लोग अपने विचार दीजिए। आपका स्वागत है, और अगर हैंड रेज कर देंगे तो हमें इन्वाइट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। मैडम पारुल जी नमस्कार, स्वागत। नमस्कार सर जी। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन था कि मैं बस सुनती रह गई। सभी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया। मैं बस इतना जुड़ना चाहती हूँ कि अगर फीमेल पेशेंट पे बात होती तो कुछ और मजा आती, क्योंकि प्रेगनेंसी में और पोस्ट डिलीवरी जब अर्श होते हैं तो वो महिला जो है काफी पीड़ित होती है। तो उसके अंदर क्षारसूत्र करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो फीडिंग मदर है, तो उसको जो मेडिसिन आप सामान्यतः दे देते हैं उसको नहीं दे सकते, और उसको पेन भी ज्यादा होगा क्योंकि अभी अभी वो डिलीवरी से निकली है। तो ये एक पॉइंट जो था, इसके ऊपर कोई अगर भविष्य में कोई लाइट डाले तो ये अच्छा पॉइंट रहेगा। वर्तमान ये एक तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आप मंगलवार को आप भी स्पीकर हैं, ट्यूसडे को, तो कौमार व्रत वाला जो भी शल्य का सुश्रुत जी का आप बोलना चाहें, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हम तो प्रसूति स्त्री पे बोलेंगे, मानसी ने हाँ कर दी है, शायद निपा बहन भी जुड़ेगी, शायद जुड़ेगी निपा बहन, और जैस्मिन को पीएचडी थीसिस करना है। कल तक फोटो डिटेल भिजवा दीजिए। जी जी बिल्कुल, वे लोग भेजेंगे, कल तक आ जाना चाहिए। सैटरडे संडे था ना, इसलिए सब रुका है। लेकिन बहुत बढ़िया रहा आज का सेमिनार, और मॉडरेटर साहब भी बहुत बढ़िया इमोशनली इन्वॉल्व होके मॉडरेशन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। इस उम्र में इन स्टूडेंट्स को बच्चा के गाइड करना, ऑनलाइन गाइड करना, वो उनका इमोशनल बॉन्डिंग बता रहा है, और ये आयुर्वेद की मौलिकता है। So I really congratulate both Guruji and Shishya for their emotional bonding at this age and after this achievement. बहुत बढ़िया बात रही, और इसीलिए मैं मैडम इला देशपांडे को ज्वाइन नहीं कर रही हूँ कि वे ऐसे ही बिहेव करेगी। अगर उनको मैं ज्वाइन करूंगी तो वैसा ही बिहेव करेगी। हम दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, और वो मैडम जी इसी तरह बिहेव करती है, तो हम धन भागी है। वी आर वेरी लकी टू हैव सच गुरुज इन अवर परंपरा। So with this, Shubha Ratri to everybody. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आपके जो विचार आपने बहुत अच्छा रखा कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अगर कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होती है तो हमारे सर्जन्स क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं। पर एट द सेम टाइम हमने ये भी निवेदन किया था कि आप भी अपने सर्जन्स को याद करिए। महेश जी से इस विषय पर महेश जी से बोलूंगा कि महेश जी या तो खुद बोलें कल परसों जब भी हो, जब भी पारुल मैडम कहेंगे और आप कहेंगे तब मैं इस विषय पे बोल दूंगा सर। सर हमारे पास तो 7 दिन का समय है, अभी तो पहला दिन हुआ है। मालिक आप हमसे क्या परमिशन चाहिए आपको? नहीं साहब, कल से परसों तो आप ही मॉडरेटर है सर, मैं क्या करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और न मैं कोई गुरु हूँ, डॉक्टर राठी जी विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे कोई गुरु मत कीजिए। डॉक्टर रेखा राठी, मैडम रेखा राठी जी को आमंत्रित करता हूँ। मैम आइए, स्वागत है आपका, नमस्कार जी। प्रणाम सभी गुरुजी को, और थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स एंड सभी सीनियर्स। सर आप अग्निहोत्री सर अभी बोल रहे थे डिप्लोमा इन क्षारसूत्र के बारे में, तो मैं उस बारे में जानना चाह रही थी कि कहाँ है और कितना ड्यूरेशन है, कैसे हो सकता है। हाँ सर बताइए। हमारे सुभाष जी तो हमारे तो टाइम में 8 से 8 होता था जी।
आंसर अग्निहोत्री जी? या प्लीज बताइए। ये बहुत समय पहले प्रश्न उठा था, अभी साल मुझे याद नहीं है, और आयुष डिपार्टमेंट अपने CCIMs ने 2 साल का डिप्लोमा इन क्षारसूत्र कोर्स बनाया था, लेकिन उसको जो है एकेडमिक वैल्यू नहीं थी और प्रैक्टिशनर 2 साल नहीं दे पा रहे थे, इसके लिए वो अभी बंद है ऑलमोस्ट जैसा, और कोई कॉलेज उसको चला नहीं रही है। लेकिन 2-4 यूनिवर्सिटी है, एक जयपुर के NIA है, एक जोधपुर की है और एक हमारी MUHS है। ये 3 यूनिवर्सिटी का मुझे मालूम है कि वहाँ फेलोशिप ऑफ द क्षारसूत्र 1 ईयर का होता है। वहां पर उसको 9 महीने का जो है ये कार्यक्रम है, और ये जो है उसका में होता है। और दूसरा एक गुरु शिष्य परंपरा में भी है क्षारसूत्र सीखने की, ये ऑफिशियल, जो कल किसी ने बात की थी और मैं आज भी कहता हूं कि इट शुड बी दी एफिलेटेड, जो सुश्रुत ने कहा था कि राजाश्रय वाली बात है। राजाश्रय यानी 2 चीज की होती है, एक तन मन धन से और दूसरा उसकी परमिशन। तो ये आपके पास जिसको भी ये ऑफिशियल कोर्स करना है, ये इस जगह पे तलाश करें, उनको उनका जवाब मिल जाएगा। और व्यक्तिगत तौर पे मुझे संपर्क करेंगे तो मैं उसका नाम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा। और रही बात परुल जोशी जी की, अगर उनको कोई स्पीकर से नहीं मिलता है तो उस विषय के ऊपर मंगलवार या बुधवार को मुझे अगर कल सूचना मिल जाएगी तो मैं बुधवार को आपको पूरा क्लिनिकल मेरी 44 साल की प्रैक्टिस उसमें मैं आपको जोड़ के बता दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत सर, बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया। और मैडम पारस ने ही कहा था कल, वो राजाश्या और राजाज्ञा, कंसेंट और सब उसके बारे में उन्होंने ही चर्चा की थी, तो अच्छा लगेगा आप स्वयं ही अपने को प्रस्तुत करेंगे, हम सबको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए हमने निवेदन किया था कि अपने आप से कुछ जोड़ना चाहें तो स्वागत है। डॉक्टर नभा कुमार हजारिका जी, आप कुछ एड ऑन करना चाहेंगे? जी स्वागत है आपका, नमस्कार। अच्छा, नहीं, शी हैज नॉट टेकन डाउन। अरे उसकी उनकी बात आ गई ना, वो डिप्लोमा उसके लिए पूछ रही थी ना। यस, थैंक यू। यस डॉक्टर ने कर लिया था, लेकिन हाँ कर लिया। डॉक्टर नेहा कुमार हजारिका जी, स्वागत है। अरे बोलना चाहती हैं सर वो। अच्छा प्लीज अनम्यूट करना, उसको अनम्यूट करने को बोलो। डॉक्टर रेखा जी, आप अनम्यूट करिए, अपनी बात रखिए, स्वागत है आपका। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी। सर मैं माहिर संघवी सर से पूछना चाह रही थी कि पोद्दार आयुर्वेद में कुछ को है ना डिप्लोमा और फेलोशिप फॉर एनोरेक्टल्स? एक महीने का कोर्स है, वो IGTR करके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जोड़कर पोद्दार के साथ में शुरू हुआ था, लेकिन रेड्डी सर अभी रिटायर्ड हो गए हैं। इस साल में होगा कि नहीं अभी मालूम नहीं है, लेकिन नए HOD बनने के बाद में जो निर्णय लिया जाएगा वो नेट के ऊपर पब्लिश होता है, क्योंकि अभी उसको कंडक्ट कौन करेगा? पहले सबसे पहले स्टार्ट किया था तभी सोलंकी सर और रेड्डी सर थे और हम थे, फिर रेड्डी सर अकेले ही चलाते। अभी रेड्डी सर कुछ महीने पहले रिटायर्ड हो गए हैं पोद्दार से HOD, तो अभी नई HOD क्या निर्णय लेती है वो हम आपको सूचित कर देंगे। आपकी माहिती सही है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच सर, प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम बेटा। थैंक यू डॉक्टर रेखा जी, थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर महेश सिंघवी सर। नाउ आई अगेन इनवाइट डॉक्टर नभा कुमार हजारिका जी फॉर हिज कमेंट्स। डॉक्टर हजारिका जी, स्वागत है। यस, नमस्कार, अनम्यूट कर लीजिए। सर आप अनम्यूट हैं, हजारिका जी आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट। सर नमस्ते सर, नमस्ते सभी गुरुजनों को। आज इतना बढ़िया विषय में दोनों बात हुए, एक स्नेक वेनम के ऊपर और दूसरा वाला ये जो क्षारसूत्र के ऊपर या तो सुश्रुत के ऊपर। मैं इसी अवसर पर सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और मैंने देखा आज जितना क्षारसूत्र के या सर्जरी के, आयुर्वेदिक सर्जरी का जो विस्तृत ज्ञान मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। हम उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसा वाला ज्ञान हमको मिलते रहिए। मेरा हिसाब से हमारा जो जूनियर है और यंग जनरेशन है अभी बहुत मोटिवेट होगा, क्योंकि हमारा जो गुरुजन है इन लोगों ने इतना बढ़िया करके सारा डिस्कशन किया अपने पिता की तरफ से, पिता की तरह जैसा से। इसी हिसाब से मैं आप सभी को धन्यवाद बोल करके मेरा आज ये बात खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।
अग्निहोत्री सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इसी कड़ी में आगे इनवाइट करते हैं यहाँ पर हमारे साथ जी हैं अपने साथ सर। जी एलके द्विवेदी जी हैं। हाँ, एलके द्विवेदी बुलाते हैं। अभी कोई और अपने विचार रखना चाहे? एक प्रोफेसर समता तोमर जी जुड़ी हुई। प्रोफेसर समता तोमर जी। सीपी शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। अच्छा, आदरणीय सीपी शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी सर। आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सर सभी को डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। सर सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की प्रस्तुति सैद्धांतिक सह प्रायोगिक एक ऐसी प्रस्तुति रही सर जो हमारे भावी जनरेशन के लिए एक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस तरह की हमें यदि क्लिनिकल और थ्योरेटिकल ज्ञान कक्षाओं में छात्रों को मिलने लगे तो निश्चित ही हमारी बहुत बड़ी चिकित्सकीय विधा को महर्षि चरक की जो का कंट्रीब्यूशन है वो अप्लाइड क्लिनिकल के रूप में पूरे विश्व में आयुर्वेद की एक निश्चित ही पहचान बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी वक्ताओं को, सभी सहयोगी लोगों को और पवन जी की पूरी टीम को ढेर सारा साधुवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। डॉक्टर सीपी शर्मा सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बार पुनः हमारे जो आज के आवास पटल पर जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के निवेदन करता हूं कि आपस अपने में अगर कोई उनको विचार रखना है तो स्वागत है। और अंत में हम डॉक्टर पवन कुमार सर पिछली वेबिनार में कुछ बोलना चाहते थे। जी जी, डॉक्टर पवन कुमार। डॉक्टर पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं ऑडिबल टू यू डॉक्टर पवन कुमार जी? पिछली वेबिनार में वो प्रणाम सर। हाँ, वेलकम। प्रणाम सभी को। आज का सेशन बहुत 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 नॉलेजफुल था। मेरा पिछले सेशन में मैडम से सवाल था, डॉक्टर कल्पना से। सीके मैडम ने कहा सनेक्विनोम एंटी हाइपरटेंसिव यूज किया जा सकता है जब सीकेडी में हाइपरटेंशन होता है, किसी भी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता। क्या किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है जिन्होंने किसी को सनेक्विनोम से ऐसा किया हो? एक तो ये था। और डॉक्टर नेहा से था मेरा, होम्योपैथिक मेडिसिन में उन्होंने बताया था सनेक्विनोम यूज होता है। कौन सी मेडिसिन है जो उनके नॉलेज में है और हम उसको कैसे, क्योंकि ये आयुर्वेद का और होम्योपैथी का एक ही पर्सपेक्टिव है। सारी जो मेडिसिन है वो क्रूड ड्रग्स, तो उसमें आयुर्वेदा से ही रहता है सारा। कोई मेडिसिन को ऐसा एनलाइटेड करे ताकि हम उसके बारे में, लिटरेचर के बारे में पढ़ें और देखें। और तीसरा था सर मेरा कर्नाक रस के जो वसवराज योग वाला जो बताया था डोमा जगदीश्वर सर ने, तो उसका मेडिसिन का क्या कॉस्ट रहता है ताकि हम एक बार उसको मंगवाएं और यूज करके देखें। चलिए, आदरणीय जगदीश्वर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आदरणीय जगदीश्वर जी, आर वी ऑडिबल? नहीं, ऑडिबल नहीं है जी सर। डॉक्टर पवन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहमति है तो कल के प्रोग्राम के बारे में बता दें। हाँ, बताएं। Good convention. And the legacy of surgeons of today in Ayurveda are the legacy of SUSHRUTA. Should prove it great. And we should be competent enough at every stage. Even they may claim that we are far advanced. Advanced will be those who have come on this earth and presented and designed and performed. Those are the advanced. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Domaji. Dr. Pawan Kumar was asking about the medicine cost that you have informed regarding, which is made up of or which is containing venom. He was asking that question apart from your comments over the Sushruta today's presentation. Yeah. It was 2 grams packing, costing 133 rupees. 2 grams packing. Okay. सर आप अपना नंबर डिस्प्ले कर दे प्लीज, हम कल बात कर। Sir, this is the cost you purchased on that day. I think since then
questions of water in Ganges have passed, so I don't think that it will remain the same cost, because it's very rare, and you have collected, you have purchased all the stock. I think total stock is with you, as you told. Yes, Agnihotri ji, all the stocks I purchased. So Sir, I don't manufacturing think date क्या है Pawan उससे Kumar पता ji लगे. be having such a patient where it can be used, and if at all it happens, the efficacy will be justified or validated on that medicine's use. सर And one more thing is there. एक डॉक्टर नेहा जी से एक और क्वेश्चन था, जो उन्होंने आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बताया था जिसमें स्नेक वेनम का जैसे अर्धनारीश्वर रस बताया था, उन्होंने वो एक बार उसका ग्रुप में उनका लिस्ट डाल दे मेडिसिन का, मैं वो उसको बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सुन नहीं आप जुड़ते रहिए, आप जुड़ते रहिए जी, आप जुड़ते रहिए. मैं तो ये कह जी. रहा हूँ पवन कुमार जी, जुड़ते रहिए डेफिनेटली, और चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दिया कीजिए, तो स्पीकर उस समय देख लेता है. बोलना तो हम अलाउ नहीं कर सकते इंटरप्शन के लिए हर एक को, लेकिन फिर भी चैट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा. डाला सर, मैंने पर्सनली मैसेज भी किया था चैट बॉक्स ये क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर नेहा ने लिख दिए थे, वो सारा जितनी उनकी लिस्ट थी जो उन्होंने इन्यूमरेट किए थे लिख दिए थे, और होम्योपैथी का भी लिखा था. मुझे ऐसा याद आ रहा है, अपना जो मॉडर्न मेडिसिन का वर्टिप्राइज इंजेक्शन है, तो वो भी वेनम से ही निकला है, वेनम के डेरिवेटिव डिराइव किया गया. ऐसे ही एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन में भी उसका है, और मैं नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, तो समय बहुत हो चुका है. मैं आदरणीय चैट बॉक्स में शो नहीं हो रहा सर, मैं पहले पर्सनली मैसेज ही बोला था, क्योंकि हमारे पास टाइम ही कम रहता है, सारे इतने स्पीकर होते हैं. नहीं डाला था, चैट बॉक्स में डाल दिया था. मैं आदरणीय आप कहाँ से हैं पवन कुमार जी? पवन कुमार जी आप कहाँ से हैं? सर मैं करनाल हरियाणा से हूँ. मैंने वो उसके हनुमान पराकोट्य दिवस के ऊपर भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कुमार है. जी. हाँ, हनुमान के दिवस जयंती पे हम 9 पवन कुमार इकट्ठे हुए थे. बहुत अच्छा, स्वागत है. मैं करूंगा फिर तो, ठीक है, करनाल आपने बोल दिया, मैं प्रयास करूंगा कि आपको आपका उत्तर मिल सके. ठीक. अग्निहोत्री सर, अब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया हूँ जहाँ मैं इसका आज के वेबिनार का क्लोजर की स्थिति आ रही है. तो मैं आदरणीय प्रोफेसर द्विवेदी जी को महेश जी क्या बोलना चाहते निवेदन हैं? करता हूँ कि आइए सिंगल कल से जो आइए. है, कल शाम को 9 से 10 के बीच में यही श्रृंखला की तीसरा लेक्चर होगा. पहले में जो है प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर डॉक्टर सारंगपाणी हैदराबाद से बोलेंगे. दूसरे स्पीकर्स जो है वो है नूतन, सी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन शालाक्य. वो विद्ध कर्म के ऊपर शालाक्य के अंदर उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे. और तीसरे जो है लेडी जो है डॉक्टर शुभांगी करके, सी इज ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन शल्य एंड नूतन इज इन शालाक्य. वो अग्नि कर्म के ऊपर अपना वक्तव्य रजू करेंगे. तो मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि आप कल भी जुड़े और हमेशा जुड़े, और ये हमारी श्रृंखला को आगे आपके सुझाव से बढ़ाते रहे. धन्यवाद. प्लेटफॉर्म फॉर यू टू कंक्लूड. थैंक यू वेरी मच सर, यू अलाउड मी. धन्यवाद सर, आपने कल का प्रोग्राम बतलाने के लिए. सभी बहुत ही रिनाउंड पर्सन्स कल भी अपने लेक्चर देने जा रहे हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं. आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं पुनः एक बार आदरणीय द्विवेदी जी को से अनुरोध करता हूं कि वो आज की दोनों ही वेबिनार के टॉपिक से अपने आशीर्वचन देने की कृपा करें. आदरणीय द्विवेदी जी, नमस्कार. आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट. सर, आज जो 2 वेबिनार हुए उसमें पहला स्नेक वेनम के बारे में था. रसशास्त्र में स्नेक वेनम जो है वो एज इट इज नहीं आकर के कृष्ण सर्प पूरा ही काम में लेते हैं. कहीं स्नेक वेनम से भी कुछ योग बनते हैं, किंतु वहां पे हम सर्प विष नाम देते हैं. जो विष और वेनम का अंतर बता रहे थे विद्वान लोग, ये आज की कल्पना है, परिकल्पना है. पहले विष ही होते थे, और 3 तरह के विष हैं, तो स्थावर, जांगम और इस तरह से जांगम, उद्भिद, पार्थिव. तो यहाँ पे जो कुछ रसयोग बनते हैं उसमें सूचिका भरण रस भी एक चर्चा में आया था, और सूचिका भरण रस में विष शब्द है, वहां सर्प विष शब्द नहीं है. और फिर टीकाकार तीनों विषयों को रिकमेंड कर देते हैं, जिसको जैसा अनुकूल लगे उस तरीके से उसको बनाइए, और फिर रक्त भेषज संपर्कात करके जो औषध वहां कार्य करेगी, इस तरह का कॉन्सेप्ट है. और इसी से जो है इंजेक्टेबल्स जो है आयुर्वेद में होना चाहिए, ये बात उठती है. इंजेक्शन थे भी सही, और आज जो आयुर्वेदिक ड्रग की परिभाषा है उसमें वो अभी तक कवर नहीं हो रहे हैं. फिर भी
जो आयुर्वेदिक प्रोसेस से बनने वाले रस योग हैं वो चिकित्सा में काम में ले सकते हैं। तो सूचिकापर्ण रस है, एक अहिवद रस है जो कुष्ठ श्वास वगैरह में काम में आता है, ताम्र से बनता है, और वो कृष्ण सर्प के उदर में ताम्र चक्री का रखने के बाद में उसको घड़े में पुट देते हैं, और बाद में जो कुछ अंदर मसी रूप में बनता है या भस्म वगैरह होती है उसको काम में लेते हैं। और उदयपुर में इस पे काम भी हुआ था, और एक्सपेरिमेंटल में रेबिट के ऊपर कोबरा को दंश करवा के और ये काकपद बना करके कुछ लगाने का प्रयास किया, किंतु उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि मात्रा तय करना कि साहब सर्पविष रेबिट के लिए कितनी मात्रा में देना है वो नहीं होता है। आपने दंश करवाया और वो तो तत्काल मर जाता है, आधा घंटा भी नहीं जीता बड़ी मुश्किल से, और औसत संपर्क से भी वहां कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा था। इस तरह का एक्सपेरिमेंटल उदयपुर में हुआ था करीबन 30 साल पहले। और इसी तरह से कुछ लोग सर्पविष को इकट्ठा करके उसका शोधन करके कैंसर के लिए भी दवा बना के देते हैं निजी तौर पे, या कुछ ऐसे कंपनियां भी होगी जो सर्पविष को इस तरह से काम में लेती है, किंतु उसमें सीधी बात है कि साहब सर्पविष का आयुर्वेदिक विधि से शोधन होना है, और उसका रक्त के माध्यम से प्रयोग नहीं है, वो सीधा मौखिक प्रयोग है, और इसलिए हमको उसमें डरने की भी जरूरत नहीं है। सन्निपात के क्रम में सर्पदंश फल को दंश करवा के वो फल सन्निपात रोगी को देने का विधान भी आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो आज जो चर्चा हुई, जगदीश्वर जी ने जो बताया इम्कोप्स कंपनी का, वो वैद्य योग रत्नावली एक वहाँ की बुक है, और उसके अंदर वो फॉर्मूला भी है तरुणार्क रस नाम से, और वसव राज्यम से उन्होंने लिया। किंतु वहाँ जो लिखा हुआ है उस प्रोसेस को देखने पे आज जो लेबल की कंडीशन है उसके आधार पे कुछ अलग स्थिति बनेगी। तो मैंने रिक्वेस्ट भी किया था जगदीश्वर जी से, साहब जो आपके पास पैकिंग है उसके ऊपर लेबल पे कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या, जैसा आपने बताया घटक द्रव्यों का मात्रा वगैरह। तो क्या है कि सर्पविष शुद्ध करके वहां काम में लेना है, जो बुक में नहीं लिखा है, या इनको उसकी बुक में पीछे जहाँ पे शोधन वगैरह दिए वहां भी सर्पविष का शोधन नहीं है, सर्पविष का प्रयोग भी परिचय भी नहीं दे रखा ग्रंथ में। तो इस तरह से कुछ इस तरह का है कि साहब ये काफी पहले ग्रंथ रचना हुई और औषध योग बना, आज बनता है नहीं बनता है इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। जगदीश्वर जी के पास जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी पता लगे तो हम लोग कुछ कल्पना कर सकते हैं आज के तारीख में क्या प्राइस होगी उस तरह से। धन्यवाद। आपने 2019 का है, 19 हाँ 19 का पैकिंग है, और हाँ 19 का। और खूबी ये है अपने पास, तो ये सवाल ये उठता है हर एक्सपायरी डेट, इसे तो मेरा माथा फट जाता है, क्योंकि हाँ भले ही उस पे एक्सपायरी डेट नहीं था, मैं तो परमात्मा को एकदम याद किया, वाह वाह ये तो कितने ही साल रख सकते हैं, जीवन भर सूर्य चंद्र रहे तक, ऐसा रख करके पूरा ले लिया। नहीं, अगर यथावत सुरक्षित है तब कोई दिक्कत नहीं, किंतु पैकेट खोल लिया तो फिर उसको उपयोगी करना है, नहीं तो फिर उसमें परिवर्तन आते हैं वातावरण में, वायुमंडल में जो है उसके आधार। हाँ वो हो सकता है, लेकिन बहुत सतर्क रूप से करेंगे तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां पर वो रिएक्ट करता है, रिएक्शन तो होगा ही नहीं। और दूसरी बात 1971 में जो रसौषधि मैं खरीदा हूँ, श्रीनिवास आयुर्वेदिक सेंटर हैज कम इनटू फोर्स 1971, जब का भी मेरे पास है दवाएं। सर बात सही है आपकी, स्नूही जो क्षीर है उसको विष माना है, और उसमें भी कोई हर्बल ड्रग होने से एक्सपायरी डेट होगी क्या? तो साहब रुक्मिश रस करके एक औषधि है जिसमें पारद गंधक नहीं है, किंतु फिर भी उसका नाम रुक्मिश रस है, और उसका प्रयोग करने से अगर विरेचन होता है इसका मतलब औषधि इफेक्टिव है। तो ये जो एक्सपायरी डेट वाली बात आपने जो छेड़ी है, ये आईपी की नकल करके हम पढ़े लिखे लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए कुछ सूचना देने वाली बात है। नहीं तो जो रस चिकित्सक है जो दवा बनाता है उसको सारी स्थिति पता है, और सारंगधर ने जिसने सवीर्यता अवधि लिखी, एक्सपायरी डेट नहीं लिखा, उसमें भी हीन वीर्य हो जाएगा, सापेक्ष लघु हो जाएगा डिटोरेट होने के कारण से, ये मान सकते हैं। किंतु उन्होंने ये कहा कि द्रव्य में जब तक रस गंध वर्ण रस है स्वाभाविक कल्प के, तब तक उस औषधि को हम काम में ले सकते हैं, उसको एक्सपायरी नहीं मानेंगे। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, इसलिए आप परेशान मत होइए।
एक्सपायरी डेट के नाम से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छी अच्छी कंपनियां भी दवा रिकॉल करके ट्रीट करके वापस बेचती है, मल्टीविटामिन वगैरह में, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे या फिर उसमें वो कलेक्ट करके लाएंगे फिर प्रोसेस करके भेजेंगे। तो ये एक ट्रीटमेंट का तरीका भी होता है जो शास्त्रीय संदर्भों में आपको इशारा भी मिलेगा। और रसशास्त्र का मामला है, इसलिए अपन इस बात को कह सकते हैं कि साहब जब तक स्वाभाविक गंध वर्ण रस है कल्प में तब तक वो एक्सपायर नहीं होता। और अगर किसी को है तो रुक्मिश रस 40 साल पुराना मेरे पास रखा हुआ है कालाड कंपनी का, आप एक गोली लेके देखिए, दोबारा मांगेंगे नहीं और डिहाइड्रेशन होगा। जबकि फलश्रुप में लिखा है कि सारे संपूर्ण शरीर में धातुएं नहीं बन जाती है और बड़ा अच्छा है इस तरह से। तो वास्तव में वो शरीर का शोधन करता है और बाद में शरीर में जो आहार और आचार रसायन का सेवन करेंगे उससे आपका शरीर स्वस्थ और अच्छा बनेगा और पुनर्नवीनीकरण होगा। तो इसके बाद में वेरी जी, मैं 86 में कुप्पी मात्राएं खरीदा हूँ, एकदम ले लिया, मैंने खरीदा हूँ नहीं, एक वैद्य परंपरा वालों से। वो लोग आज के जो लोग हैं वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, उनके दादा लोग कहीं बनाए, तो वो 1935 या 30s में बनाए से है, तो वो मैं एकदम ले लिया। आज भी दे दें आप फोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा रहता है उसका मर्दन, और उस पे एकदम मोहर मारा हुआ है वो कौन सा औषधि है, कुप्पी मात्रा में। ये तो वो जब लेबल पे नहीं लिखा हुआ है तब फिर तो पहचान आपको ही करना पड़ेगा ना। वो लेबल का सवाल नहीं है, वो वैद्य लोगों का है तैयारी। वो लोग एकदम मोहर मारे हैं, जैसा वही वात विध्वंसन रस वा वी, ऐसा वैष्णवी रस वाई रा, आनंद भैरवी आ भाई, ऐसा करके एकदम पुराने जमाने के जो अक्षर का बनाया हुआ वो कापर का जो होता है ना, वो सील मारे सो वैसा है कुप्पी मात्राएं। वो देख करके ही मैं ले लिया। नहीं, वो आप ले लें, किंतु वास्तव में श्रद्धा विश्वास तो होना चाहिए जिसको आप ले रहे हो वो विधिवत बना हुआ है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल सर, तो एकदम शास्त्रीय युक्त है वो। इसी के साथ में गहराई तक पहुंच आज गया है, समय हो गया। शल्य के लिए सुश्रुत जन्म दिवस के सप्ताह के रूप में जो दूसरा दिन हुआ उसमें जो वक्ताओं ने बहुत अच्छा सब प्रायोगिक अपने अध्ययन अनुभव को प्रस्तुत किए और वास्तव में सारगर्भित था, साथ में वो एक तरह से इंफॉर्मेटिव भी था और रस चिकित्सकों के लिए, आयुर्वेद के लिए कि साहब हम लोग किस तरह से इसको लेते हैं। हालांकि सूत्र रूप में सुश्रुत में सारे सूचनाएं आपको मिलेगी कि नाड़ी में कहीं भी शरीर में नाड़ी व्रण हो वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्षार सूत्र का, या जो कवलिका या वर्ती जो अंदर प्रवेश करते हैं उस तरह से क्षार वर्ती का, और वो हीलिंग होता है। इसलिए उन्होंने प्रायोगिक करके बताया। पेशेंट आपके पास कम आते हैं, ये एक अलग बात। इसके साथ में मैं सभी लोगों को, विद्वानों को साधुवाद देता हूँ, मुझे धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर आदरणीय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमेशा आशीर्वाद देते हैं इतने समय रात्रि तक, बहुत अच्छा लगता है और सही नई सूचनाएं मिलती हैं। ओवर टू पवन शर्मा जी और क्लोजिंग। नमस्कार सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, सभी को आभार। महेश जी को स्पेशल आभार कि महेश जी ने एक अलग ही श्रृंखला शुरू कर दी सर। जय हो, आप सबकी जय हो। शुभ रात्रि। 8 बजे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फॉर डायबिटिक डिसऑर्डर, 8 बजे।